गुड इवनिंग। ओके। तो आज आप लोग का वीए क्लास है। तो वीए क्लास में वी हैव डिसाइडेड दिस स्ट्रक्चर की स्टार्टिंग के हाफ एन आवर वी विल डू जीके, जो अभी मैं कराऊंगा, एंड देन 7:30 to 8:30 वी होगा। ठीक है। सो दैट्स हाउ वील गो। तो अब जीके में देखिए दो पार्ट्स होते हैं। वन इज ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। ओके, फाइन। तो जीके में दो पार्ट्स प्राइमरीली होते हैं, एक होता है करंट अफेयर्स और दूसरा होता है स्टैटिक जीके। मतलब ऐसा जैसे हिस्ट्री है हमारा, वो स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम है, तो उसके जो भी फैक्ट्स हैं वो चेंज नहीं होते हैं, राइट। बट जो करंट अफेयर्स है वो जो रिसेंटली कुछ हुई हैं इवेंट्स, उसके रिलेटेड ही होता है। फाइन। तो हम लोग दोनों ही एस्पेक्ट्स पे ध्यान रखेंगे इन दीज हाफ एन आवर सेशंस, राइट। तो आज मतलब वो जो स्ट्रक्चर होगा क्लास का वो भी फिक्स नहीं है। कभी ऐसा हो सकता है कि मैं डायरेक्टली आपको एक पीपीटी के थ्रू ही बता दूं, राइट। जैसे आज थोड़ा सा डिफरेंट है, आज मैंने एक क्वेश्चन बनाया है। वो क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करेंगे, 5-10 मिनट्स ही लगेगा। 10 क्वेश्चन ही है, राइट। एंड देन आई विल डिस्कस द आंसर्स। सिर्फ ऐसे आंसर्स बताऊंगा नहीं कि इसका आंसर ये है, वो उसके आगे पीछे की जो भी स्टोरी है वो भी हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो मैं ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ एंड यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट अटेम्प्टिंग। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोग को इसका पीडीएफ आ गया होगा, तो आप भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। पीछे ये ले लो।
हो गया, सबका अटेम्प्ट हो गया? ठीक है। तो देखिए कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो आपको जानने चाहिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके पीछे की स्टोरी आपको जाननी चाहिए, राइट? तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपने सभी ने अटेम्प्ट कर लिया? यस। ठीक है, ये लो। तो इसमें ऊपर डेट लिखा है Feb 15 to Feb 28। तो दैट मीन्स ये 14 डेज के ड्यूरेशन में जो भी इवेंट्स हुए थे उसके ऊपर ही ये क्वेश्चंस मैंने लिए, राइट? सो दैट डज नॉट मीन कि इन 14 डेज में ये 10 ही इवेंट्स हुए थे, देयर वर मैनी इवेंट्स, बट मैंने वही इवेंट्स पिक किए हैं जो मुझे लगा आपको जानने चाहिए, या एग्जैक्टली अगर वो इवेंट जानने की जरूरत नहीं तो उसके पीछे का कंटेक्स्ट वो तो आपको जानना चाहिए, राइट? सो दैट इज वाई आई हैव पिक्ड दीज। तो डायरेक्टली वी विल स्टार्ट डिस्कसिंग। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर किसी को पता है? हाँ, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ ब्रिक्स समिट 2025? चलो कौन होस्ट है पहले हम वो बात बाद में करेंगे। व्हाट इज ब्रिक्स? ब्रिक्स क्या है? हाँ, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ कोरिया। एक तो और साउथ है, साउथ अफ्रीका, राइट? तो ब्रिक्स एक ग्रुप है ऑफ सम कंट्रीज। तो टोटल कितने कंट्रीज हैं ब्रिक्स में? पांच, छह, अभी 11 है। ठीक है, इट स्टार्टेड विद ब्रिक, BRIC, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, राइट? इट स्टार्टेड इन 2003 और 4। देन इन 2010 साउथ अफ्रीका वाज आल्सो इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप, तो इट बिकेम ब्रिक्स। ठीक है, तो ये 4 कंट्रीज क्यों थे एक साथ इन द बिगिनिंग 2021 में? व्हाई ओनली दीज 4? ऐसे और बहुत सारे कंट्रीज के बहुत सारे ग्रुप्स हैं, G7 है, G10 है, G20 है, राइट? बहुत सारे ग्रुप्स हैं, राइट? तो देर इज सम कॉमन थीम इन ऑल दोज ग्रुप्स, राइट? फॉर एग्जांपल एशियन है तो साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज हैं उसमें, फाइन। तो वैसे ही ये BRIC, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, व्हाई वर दे पुट टुगेदर? तो इसका स्टोरी ये है कि दे वर नॉट पुट टुगेदर, दे डिड नॉट कम टुगेदर बाय देयर ओन विल। एक इकोनॉमिस्ट था, एक कंपनी है गोल्डमैन सैक्स, उसका एक इकोनॉमिस्ट था, उसने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया इन 2000 और 2001। एंड इन दैट रिसर्च पेपर ही सेड दैट इन दिस कमिंग सेंचुरी, जो वो न्यू सेंचुरी उस समय स्टार्ट हो रही थी, सो इन दिस कमिंग सेंचुरी 4 इकोनॉमीज विच विल रूल द वर्ल्ड और विच विल गाइड द वर्ल्ड आर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। और उसको उसने एक ये एक्रोनिम दिया, BRIC। तो ये इट कॉट ऑन, तो ये 4 कंट्री ने सोचा चलो ये बोल रहे हैं तो हम लोग मिल के कुछ करने का सोचते हैं, राइट? एंड दैट्स हाउ दिस ब्रिक, अ फॉर्मल ब्लॉक, वाज फॉर्म्ड, राइट? फिर उसमें इवेंचुअली साउथ अफ्रीका वाज आल्सो इन्वॉल्व बिकॉज साउथ अफ्रीका वाज आल्सो डूइंग वेल इकोनॉमिकली इन अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो ऐसा था। तो अभी ब्रिक्स में और काफी सारे कंट्रीज ऐड हो गए हैं, जिसमें नाउ देयर आर टोटल 11 कंट्रीज। ठीक है, सो आई हैव पुट द नेम्स, मुझे भी याद नहीं है, सो यू कैन रीड। सो इट इज नॉट जस्ट 5। सो रियो डे जेनेरियो इज द कैपिटल सिटी ऑफ ब्राजील, ब्राजील विल बी द होस्ट। ठीक है, एंड दिस विल हैपन इन जुलाई। ठीक है, so the theme will be this: Brazil aims to focus on global governance reform and stronger cooperation among global South nations. तो we will see what is global South. Global South नाम तो सुना होगा। ग्लोबल साउथ मतलब, चलो ठीक है बताता हूँ। सो ब्रिक्स वाज फाउंडेड इन 2009, फिर बाद में 2010 में साउथ अफ्रीका भी इसमें इंक्लूड हो गया। सो दीज आर द कंट्रीज जो अभी इसके अंदर है, 11 कंट्रीज है। ठीक है, तो ये सभी कंट्रीज, एज यू कैन रीड द नेम्स, आपको पता होगा, दे आर नॉट डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, डेवलप्ड कंट्रीज मोस्टली सब अमेरिका एंड यूरोप में पाए जाते हैं, तो इनमें से कोई भी वैसा कंट्री नहीं है, राइट?
सो दे आर ग्रोइंग कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज, पुअर कंट्रीज भी नहीं है बट दे आर नॉट डेवलप्ड ऑल्सो, ठीक है। सो दे आर, वी कैन से इट इज द ग्रुप ऑफ wannabe कंट्रीज, जो उनको डेवलप्ड होना है, राइट, एक दूसरे की हेल्प करके, वैसा वाला है। क्लियर है? ग्लोबल साउथ यहाँ पे एक टर्म आया था, तो ग्लोबल साउथ इज दिस, ये वर्ल्ड मैप है, ये तो पहचानते हैं, राइट। तो मैप में ऊपर नॉर्थ होता है और नीचे साउथ होता है, ये भी पता है। अगर आप इंडिया का मैप रिकॉल करें तो इंडिया का मैप में जो कश्मीर, दिल्ली, ये सब जो पार्ट्स हैं वो ऊपर की तरफ आते हैं, वो नॉर्थ इंडिया है। क्लियर है ना? सो दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। सो नॉर्थ इज नॉर्मली रिचर देन द साउथ, ठीक है। आप देख लो, अमेरिका जो सबसे रिच कंट्री है वो ये रहा, नॉर्थ अमेरिका, राइट। कनाडा वगैरह सब इधर ही है। यूरोप इज ऑलमोस्ट इंटायरली इन दिस नॉर्थ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्लियर है? तो साउथ वाले जो पार्ट है, अफ्रीका विच इज रिलेटिवली पुअर देन द एंटायर वर्ल्ड, वो पूरा साउथ में ही है, राइट। साउथ अमेरिका इज ऑल्सो पुअर। क्लियर? एशियन, मैनी एशियन कंट्रीज आर ऑल्सो पुअर। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा है जो पुअर नहीं है, सिर्फ उसको हमने यहाँ से हटा दिया। तो बाकी जो भी बचता है साउथ में, ऑल ऑफ दोज कंट्रीज आर पुअरर एज कंपेयर टू देयर नॉर्दर्न काउंटर पार्ट्स, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड ग्लोबल साउथ। समझ आया? तो इन सबको साथ में लेके हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, तो दैट इज द थीम ऑफ ब्रिक्स। समझ आ रहा है ना? तो ब्रिक्स का होस्ट कौन है वो शायद आप लोग को जानने की जरूरत नहीं है, बट ये सब ब्रिक्स क्या है, क्यों है, कितने लोग हैं इसमें, वो जानने की जरूरत है, ठीक है। क्योंकि आपके जब एग्जाम्स आएंगे तब तक तो ये हो चुका होगा, तो दैट विल नॉट मैटर एट दैट टाइम। क्लियर है बात? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ओवोइड। तो ब्रेन में हमारे बहुत सारे सेल्स हैं, एंड डिफरेंट सेल्स हैव डिफरेंट फंक्शंस, राइट। ये ओवोइड का क्या फंक्शन है? इट इज टू प्ले अ रोल इन रिकॉग्निशन मेमोरी, ठीक है। तो आप लोग जब भी किसी को मिलते हो तो या तो वो इंसान नया होगा या तो आप पहले उससे मिल चुके होगे, दो ही तरीके के लोग से मिलते हो ना। इधर द पर्सन विल बी न्यू टू यू, जैसे आप में से कुछ लोग होंगे जो मेरे शायद मेरे से पहली बार मिल रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम आओगे तो आई एम नोन टू यू, तो आप पहचान लोगे मुझे। आज फर्स्ट टाइम जब आए हो तो आई एम न्यू, तो आप लोग नहीं पहचान रहे हो। तो जो भी मेरी इमेज है वो अभी आपके दिमाग में फीड हो रही है, एंड दैट इमेज विल बी सेव्ड। फिर नेक्स्ट टाइम जब मुझसे मिलोगे या क्लास में या कहीं और, तो वो इमेज के साथ कंपेयर करके यू विल आइडेंटिफाई मी कि हाँ ये वही सर है। समझ आ रहा है ना? तो दैट्स हाउ इट हैपेंस, आइडेंटिफिकेशन वाला जो प्रोसेस है हमारा। क्लियर है? तो ये जो इमेज सेविंग वाला पार्ट है, जैसा कंप्यूटर में होता है वैसा ही ब्रेन में भी होता है। एक बार आप किसी इंसान से या कोई चीज को देख लेते हो, कोई इंसान को मिल लेते हो, तो उसकी इमेज आपके ब्रेन में सेव हो जाती है। तो ये जो पार्ट है, सेविंग द इमेज ऑफ दैट पर्सन और दैट थिंग और दैट प्लेस, ये पार्ट, ये कौन करता है? ये ओवॉइड जो सेल्स है ये करता है, ठीक है। तो ओवॉइड, इसको ओवल शेप आप लोग ने सुना होगा, ओवल, राइट। तो ये थ्री डायमेंशनल ओवल शेप होते हैं, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ओवॉइड, ठीक है। बाकी मैंने बता दिया। तो ये जो डिस्कवरी है, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? क्योंकि ये रिकॉल के साथ रिलेटेड है, कि हम लोग ने जो पहले जो चीज देखी हुई है या जिससे मिले हुए हैं उसको हम रिकॉल कर पाए। तो देर आर सम डिसऑर्डर्स जिसमें हम लोग ये रिकॉल वाली जो कैपेबिलिटी है हमारी वो भूल जाते हैं, वो खो देते हैं, ठीक है। हम लोग रिकॉल नहीं कर पाते कि ये इंसान कौन है, फाइन। तो वो सब इलनेसेस के ट्रीटमेंट में नाउ दिस डिस्कवरी में हेल्प, ठीक है। सो दैट इज व्हाई दिस इन्वेंशन ऑफ दिस डिस्कवरी इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। समझ आ रहा है क्या? ओके, नेक्स्ट। तो आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो सोचते होंगे कि जो शायद थोड़े इन्वायरमेंटली कॉन्शियस हैं, एंड सोचते हैं कि इन्वायरमेंट मतलब काफी सारे स्पीशीज हैं एनिमल्स के जो ऑब्सोलीट होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, एंड नोबडी इज डूइंग एनीथिंग अबाउट दैट। कोई सोचता है कि ऐसा कोई इतना है कॉन्शियस? नहीं, ठीक है। तो चलो, ऐसा सोचना चाहिए, एंड देर आर पीपल हु आर थिंकिंग इन दैट डायरेक्शन। एंड ये जो है बायो बैंक बनाना एक जू के अंदर, वो उसी डायरेक्शन में एक स्टेप है। क्लियर? तो बायो बैंक क्या है? इसका आंसर है ए। हाँ, तो आंसर ए है, दिस बायो बैंक इज इन कैलकटा, इज इन वेस्ट बंगाल,
तो ये इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो समझ लेते हैं बस। सिग्निफिकेंस ऑफ दिस बायो बैंक इज, ऐसी जो भी स्पीशीज हैं एनिमल्स की जो एंडेंजर्ड हैं, जो अभी या अब से थोड़े साल के बाद जो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, तो वो एक्सटिंक्ट ना हो, या वो एक्सटिंक्ट हो जाए तो हम उनको फिर से रिवाइव कर सके, तो उसके लिए हमें उनके सेल्स को प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा, उनके जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं। क्लियर? सो दैट हम लोग प्रॉपर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करके उनको फिर से रिप्रोड्यूस करवा सकें इन द लेबोरेटरी। सो दैट इज व्हाई दिस बायो बैंक इज ट्राइंग टू प्रिजर्व ऑल दोज एंडेंजर्ड स्पीसीज, सो दैट हम उनको वापस ला सकें, या वापस लाने से भी पहले अगर उनका नंबर कम है तो उनके नंबर्स को इंक्रीज करवा सकें। ठीक है? तो समझ आ रहा है इसका सिग्निफिकेंस या इसका फंक्शन समझ आ रहा है बायो बैंक का? ठीक है, ओके। बाकी ये पीपीटी मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा, तो नोट करना है तो कर लो इसी पेपर में, ये पीपीटी तो मिल जाएगी आपको। ठीक है? हाँ, फोर्थ, विच कंट्री हैज बीन प्लेस्ड अंडर द स्टेट ऑफ इमरजेंसी ड्यू टू अर्थक्वेक स्वॉर्म? तो अर्थक्वेक स्वॉर्म क्या होता है? अर्थक्वेक तो पता है, व्हाट इज अर्थक्वेक स्वॉर्म? तो अर्थक्वेक देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि एक बार एक बहुत बड़ा शॉक आता है, उसके बाद थोड़े दिन तक उसके उसी प्लेस पे थोड़े थोड़े लाइट शॉक्स आते रहते हैं। अर्थक्वेक स्टॉर्म होता है जब बहुत सारे लाइट शॉक्स आते हैं, कोई बड़ा शॉक नहीं आता, ठीक है, बट वो इतने ज्यादा होते हैं कि आपको लगता है कि हम लैंड पे रह ही नहीं रहे हैं, शिप में ही रह रहे हैं, पूरे टाइम हिलते ही रह रहे हैं। राइट? तो दैट इज अर्थक्वेक स्टॉर्म। तो नॉर्मली जब एक अर्थक्वेक आएगा तो ये जो है, ये डॉट्स हैं, ये डॉट्स बता रहे हैं कि कहाँ पे अर्थक्वेक आया। फाइन। तो अर्थक्वेक स्वॉर्म जब आएगा तो एक ही पोजीशन पे अर्थ के अंदर बहुत सारे शॉक्स प्रोड्यूस होंगे। राइट? तो इस लैंड पे जितने भी लोग रह रहे होंगे उनको ऐसा लगेगा कि पूरे टाइम ही अर्थ हिल रही है। नॉर्मली तो 1 मिनट से ज्यादा अर्थक्वेक अगर आता है तो फिर तो सब कुछ खत्म हो जाता है। फाइन, वो बहुत बड़ा अर्थक्वेक हो, ये लाइटर शॉक्स होते हैं, इससे ज्यादा नुकसान होता नहीं है, बट ये नुकसान है कि पूरे टाइम अर्थ हिल रही है, बस ऐसा है। फाइन। तो ग्रीस में रिसेंटली फरवरी में ऐसे बहुत सारे कंटिन्यूस शॉक्स आए थे, तो वहां पे एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया गया था कि कोई बड़ा शॉक भी आ सकता है। ठीक है? ऐसा हम मान के नहीं बढ़ सकते कि अभी तो ये हल्के हल्के ही चल रहे हैं तो ऐसे ही चलता रहेगा। इट कैन बी अ वार्निंग टू अ बिगर शॉक एज वेल। ठीक है, तो वहां पे इसके लिए एक इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया था। फाइन। हाँ, तो ये आपको जानने की जरूरत होती है कि नया एक ऑफिस बेरर कौन है। फॉर एग्जाम्पल, हु इज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हु इज द न्यू गवर्नर ऑफ आरबीआई। राइट? हाँ, ज्ञानेश कुमार। राइट? सो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इन February? तो ज्ञानेश कुमार। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उसके अलावा और कितने इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं? चीफ मतलब चीफ तो एक हुआ, टोटल कितने इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं? टोटल 3 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं इंडिया में। उनमें से एक चीफ होता है और बाकी 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। बहुत बार उन दो में से ही फिर किसी एक को चीफ बना देते हैं, और बहुत बार कोई नया भी लेके आ जाता है। राइट? तो ये 3 रखने का रीजन ये है कि अगर कभी दो जन में दो, कभी भी ये डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी पे 2 लोग नहीं होते। आप अगर कोर्ट्स की हियरिंग्स भी देखो तो उसमें भी कभी भी इवन नंबर ऑफ जजेस नहीं होंगे। इफ देर आर मल्टीपल जजेस इन अ सिंगल हियरिंग, तो देर विल बी ऑलवेज ईदर 1 और 3 और 5 और 7 और 9। ठीक है, जितना इंपॉर्टेंट केस है उतने ज्यादा नंबर ऑफ जजेस होंगे, बट दे विल ऑलवेज बी इन ऑड नंबर्स। ऐसा क्यों? जिससे डिसीजन आ सके कुछ। क्लियर है? अगर इवन नंबर है तो वो डिसीजन स्प्लिट हो गया तो फिर डिसीजन नहीं आ पाएगा। अगर इक्वल इक्वल लोगों ने ऐसा हाँ, एक चीज पे हाँ बोल दिया और दूसरे पे ना बोल दिया, तो देयर विल बी नो डिसीजन। तो ऐसे ही हमें हंग डिसीजन नहीं चाहिए कि अब क्या करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अगर डिसीजन नहीं दिया तो फिर उसके ऊपर तो और जाएगा भी कहाँ बंदा। क्लियर है? तो सुप्रीम कोर्ट के सामने तो डिसीजन आना ही चाहिए। दैट इज वाई सुप्रीम कोर्ट की जो भी बेंचेस होती हैं, दे आर ऑलवेज इन ऑड नंबर्स। ठीक है, एंड सेम इज द रीजन हेयर कि इलेक्शन कमिश्नर भी एक ऐसी इंपॉर्टेंट बॉडी है जहां पर डिसीजंस आने चाहिए। वहां वो लोग बैठ के ये सोच के नहीं बैठ सकते कि यार अब दोनों तो इसे ऑपोजिट बात कर रहे हैं, अब क्या करेंगे, तो छोड़ो। है ना? तो छोड़ो वाला बात नहीं चल सकता।
देयर हैज टू बी अ डिसीजन, दैट इज व्हाई देयर आर 3 कमिश्नर्स। ठीक है, ओके। सो द पर्सन इज ज्ञानेश कुमार। तो ये जो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं ये नॉर्मली आईएएस ऑफिसर्स होते हैं। आईएएस आप लोग ने नाम सुना होगा, राइट? तो दीज आर नॉर्मली आईएएस ऑफिसर्स विद 25-30 years ऑफ एक्सपीरियंस इन डिफरेंट फील्ड्स। उसके बाद इनको इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाता है। तो इलेक्शन कमिश्नर जब अपॉइंट करते हैं तो उस समय जो कमेटी होती है जो ये अपॉइंट करती है, अपॉइंटमेंट्स करती है, उसमें भी गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं और ऑपोजिशन की तरफ से भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। ये ऑपोजिशन ये ऐसा एलिगेशंस भी ना लगा सके कि ये जो इलेक्शन कमिश्नर है वो तो आपको ही सपोर्ट कर रहा है क्योंकि आप गवर्नमेंट हो। ठीक है, तो दैट इज हाउ द कमेटी इज फॉर्म्ड। क्लियर? समझ आ रहा है ना थोड़ा बहुत तो जो भी मैं बोल रहा हूँ? ओके। विच कंट्री हैज डेवलप्ड एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामेक? आप लोग, हाँ? जापान नहीं, चाइना। तो ये एनर्जी रिएक्टर आप लोग ने, ये जो लाइट आती है कैसे कैसे प्रोड्यूस होती है इसके बारे में कभी कुछ सुना सुना पड़ा है? ये इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, ये कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है? नहीं। तो देखिए, तो एक बार ये समझते हैं, इसी के लिए मैंने क्वेश्चन डाला है। ये चाइना जानने की जरूरत नहीं है एज सच आप लोग को, बट ये जो प्रोसेस है ये एनर्जी प्रोड्यूस करके ये चाइना इतना सब क्या कर रहा है ये जानने की जरूरत है, राइट? एंड आई होप ये आपको इंटरेस्टिंग लगे। तो देखिए, पॉइंट इज, अभी जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है मोर देन 70% इज जनरेटेड थ्रू कोल। कोल को बर्न करते हैं, उसको बर्न करके जो हीट प्रोड्यूस होती है वो हीट से वाटर को बॉईल करते हैं, स्टीम बनाते हैं, एंड दैट स्टीम इज यूज्ड टू रोटेट अ टर्बाइन। आप लोगों ने शायद 10th में साइंस में पढ़ा होगा एक जनरेटर है ना, कि ओमिट हो गया था, आया होगा ना? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और फिर जनरेटर, ये 2 टॉपिक्स आए होंगे। इंडक्शन तो आया था, इंडक्शन के बाद एक जनरेटर भी आया होगा, डायनामो आया है, जनरेटर आया नहीं आया? वो ओमिट हो गया। तो काम की चीजें थोड़ा, तो मतलब ऐसा होता है जनरेटर तो, ऐसे जनरेटर टर्म तो पता है ना? तो जनरेटर टर्म, जनरेटर जो बिल्डिंग्स में भी होता है उसमें भी यही चीज होती है। उसमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है? उसमें डीजल डालते हैं, डीजल डालने से एक इंजन है वो घूमता है, उस इंजन के साथ एक अटैच होती है मैग्नेटिक कॉइल, वो घूमती है और उसके कॉइल के घूमने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो ये बेसिक है, इतना मोटा मोटा हम समझ सकते हैं, राइट? ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। तो वैसा ही सेम चीज, वो कॉइल घुमाने वाला प्रोसेस हम वहां पे करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टीम। ठीक है, तो अभी जो हमारी जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी आप मान लो कि ये सब कोल जलाने से आ रही है। हम यहाँ पे बहुत अच्छे इन्वायरमेंट में बैठे होंगे बट कहीं ना कहीं इसका पोल्यूशन हो रहा है जहाँ पे कोल जल रहे हैं, राइट? अगर आप लोग ईवी यूज करते हो आपके घर में तो आपको लग रहा होगा कि हम तो इन्वायरमेंट बचा रहे हैं, बट जो इलेक्ट्रिसिटी आप उस ईवी में डाल रहे हो वो इलेक्ट्रिसिटी पीछे कोल जलाने से ही आ रही है, तो वहां पे उसका एनवायरमेंट खराब हो रहा है। क्लियर है बात? तो ईवी भी बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट नहीं से, बस वो पॉल्यूशन यहाँ से हट के वहां चला गया जहाँ पे वो कोल जल रहा है, राइट? और दूसरी बात, ये कोल से पोल्यूशन तो हो ही रहा है, दूसरा कोल की सप्लाई भी लिमिटेड है, कितने साल चलेगा? हम 150 साल से तो कोल निकाल ही रहे हैं अंदर से, है ना? इंडस्ट्रियलाइजेशन को 150 साल हुए हैं, तब से कोल निकाले जा रहे हैं, और 100 सवा 100 साल चल जाएगा, कभी ना कभी तो खत्म होगा, राइट? देन व्हाट? सो वी हैव टू लुक फॉर ऑल्टरनेटिव्स। तो ऑल्टरनेटिव्स देखना स्टार्ट किया है, तो उसमें एक सोलर है ना? बहुत सारे सोलर प्लांट्स आप लोगों ने देखे होंगे, बहुत सारी बिल्डिंग्स के टेरेसेस पे सोलर पार्क्स भी होते हैं, फाइन, तो वो सब है। बट सोलर का भी एक लिमिटेशन है, क्योंकि उसको एक कैपेसिटी पे इंस्टॉल करने के लिए बहुत बड़ा लैंड मास भी चाहिए। अगर आपको एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी सोलर से चाहिए तो बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा एक सोलर पार्क लगाना पड़ेगा, उतनी लैंड चाहिए फिर। क्लियर है बात? ये समझ आ रहा है? तो दूसरा एक ऑल्टरनेटिव जिसमें इतना ज्यादा लैंड रिक्वायरमेंट भी नहीं है और इसमें एनर्जी एनर्जी प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा है, वो है न्यूक्लियर पावर। ठीक है, तो न्यूक्लियर पावर 2 टाइप की हो सकती है, एक न्यूक्लियर फिशन और एक न्यूक्लियर फ्यूजन।
न्यूक्लियर फिशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं ऑलरेडी, इंडिया में भी हैं और बाहर भी हैं, जो सब न्यूक्लियर फिशन पे वर्क करते हैं। ठीक है। आप लोगों ने शायद एक डॉक्यूमेंट्री देखी हो, चेरनोबिल या शर्नोबिल, जो भी बोल लो उसको, देखिए क्या? तो वो शर्नोबिल भी एक पावर प्लांट था रशिया में, नाउ इन यूक्रेन। उसमें कुछ एक डिजास्टर हुआ जिसकी वजह से वो प्लांट तो ऑफ कोर्स बंद ही है, उसके आसपास का बहुत बड़ा रेडियस में जो लोग हैं वो भी उसके जो रेडिएशन है उसकी वजह से अफेक्टेड है। ठीक है। आप लोगों ने एक और चीज सुनी होगी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की, हिरोशिमा नागासाकी, है ना? तो उसमें जो बॉम्ब गिराए गए थे वो भी न्यूक्लियर फिशन वाले बॉम्ब्स थे, तो वहां पे भी अभी भी उसके रेडिएशंस का इफेक्ट है। क्लियर? तो न्यूक्लियर फिशन वाले जो रिएक्टर्स है, ये जो पावर प्लांट्स है, उसमें इशू ये है कि उसका जो बाई प्रोडक्ट है वो रेडियो एक्टिव होता है, उसमें रेडिएशंस निकलते हैं। तो उस पावर प्लांट में अगर कभी कुछ इशू हुआ तो उसके रेडिएशंस बहुत डिजास्टर्स हो सकते हैं। ठीक है। तो दूसरा प्रोसेस न्यूक्लियर का क्या है? न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन से भी हमें बहुत एनर्जी मिलती है, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है सन। सन के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, उसमें छोटे छोटे हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं जो फ्यूज करके हीलियम बनाते हैं। हाइड्रोजन हीलियम शायद आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा होगा, है ना? तो छोटे छोटे एटम्स मिलके बड़े एटम्स बनाते हैं, दैट इज फ्यूजन। बस इतना समझ लो। तो इसमें जो नया एटम बन रहा है या जो पुराना एटम है, दोनों में से कोई भी रेडिएशंस नहीं निकालता, तो दैट वे इट इज सेफ। ठीक है। बट इसमें लिमिटेशन क्या है कि इसमें दो छोटे एटम्स को मिला के बड़ा एटम बनाना है, तो उसके लिए हमें बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, बहुत हाई अमाउंट ऑफ टेम्परेचर चाहिए, जितना सन के अंदर तो है, बट अर्थ पे उतना टेम्परेचर प्रोड्यूस करना इज नॉट पॉसिबल। दैट इज वाई ये जो प्रोसेस है इसने बनाया है, जो एक्सपेरिमेंटल एडवांस सुपर कंडक्टिंग टोकामेक। तो इसमें ये लोग यही कर रहे हैं। अच्छा, मैंने क्वेश्चन चेंज नहीं किया, कहाँ गया? हाँ, यही है। ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल सन ऑल्सो, क्योंकि इसके अंदर ये लोग कितना टेम्परेचर अचीव करना चाहते हैं? 1 मिलियन डिग्री सेल्सियस, राइट? 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस, विच इज द टेम्परेचर इनसाइड द कोर ऑफ सन, राइट? तो इतना टेम्परेचर अगर अर्थ पे प्रोड्यूस करना हो तो इट इज नॉट पॉसिबल, इजीली तो पॉसिबल नहीं है। फाइन। तो उसके लिए ये बहुत लंबे टाइम से लगे हुए हैं, तो अभी इनका ये प्रोसेस है जिसमें 17 मिनट्स तक ये लोग इतना टेम्परेचर सस्टेन कर पाए। ठीक है। तो 17 मिनट्स तक ही हुआ, उससे ज्यादा नहीं कर पाए। तो इट इज स्टिल नॉट वर्केबल कि इससे हम एनर्जी प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दें, बट इट इज एडवांसमेंट इन द डायरेक्शन कि हाँ, शायद 20-25 साल में हम लोग एक सस्टेनेबल मॉडल बना पाएंगे जो इतने बहुत लंबे टाइम तक 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सस्टेन करे, जिसको यूज करके फिर हम एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएंगे। ठीक है। तो वो जो एनर्जी होगी वो ऑलमोस्ट इन्फिनेटली आप यूज कर पाओगे, उसमें पोल्यूशन भी नहीं होगा, रेडिएशन भी नहीं होगा। ठीक है। समझ आ रहा है? इंपॉर्टेंस समझ आ रहा है इसका? ओके। विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू हैव अ ट्रांसलेशन सिस्टम? तो ट्रांसलेशन सिस्टम आप लोग ने शायद, अगर किसी ने भी पार्लियामेंट की प्रोसेस कभी देखी है, उसमें जो डिस्कशन होता है, ऐसे न्यूज चैनल चेंज चेंज करते करते कभी देख लिया? देखा है? तो उसमें बहुत बार आपने देखा हो कि कुछ लोग ऐसे हेडफोन लगा के बैठे रहते हैं। तो वो हेडफोन क्यों लगाते हैं? हाँ, लैंग्वेज ट्रांसलेशन चेंज करने के लिए। तो क्योंकि पूरा कंट्री में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं और हर जगह से लोग आके वहाँ पे डिस्कशन करते हैं, तो एक इंसान की लैंग्वेज दूसरे को शायद ना समझ आती हो, राइट? अगर मैं नॉर्थ से हूँ, मुझे हिंदी आती है, बट कोई साउथ से उसको हिंदी नहीं आती, तो हम दोनों एक दूसरे की बात को समझ नहीं पाएंगे। तो पार्लियामेंट में ये फैसिलिटी है कि जितने भी रिकॉग्नाइज लैंग्वेजेस हैं उन सभी लैंग्वेजेस में जैसे जैसे कोई इंसान बोलता है वैसे वैसे लाइव उसका ट्रांसलेशन कोई पीछे बैठा रहता है, ट्रांसलेटर, वो बोलते जाता है, राइट? और वो फिर वो हेडफोन लगा के सुन सकता है। क्लियर है बात? तो दिस फैसिलिटी वाज ओनली इन द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मतलब जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट बैठती है, राइट? स्टेट गवर्नमेंट की जो ये वाली हाउस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली। क्लियर है बात? तो स्टेट गवर्नमेंट्स में ये फैसिलिटी नहीं थी, क्योंकि स्टेट में तो नॉर्मली ऐसा होता है कि एक स्टेट के लोग हैं तो उनको तो अपने सबकी लैंग्वेज आती होगी, है ना? ऐसा नहीं कि एक स्टेट में सबको सेम ही लैंग्वेज आती है, देयर मे बी डिफरेंट लैंग्वेजेस इन अ सिंगल स्टेट ऑल्सो।
है ना। जैसे यूपी में है, यूपी में 6 लैंग्वेजेस में वो लोग ने ट्रांसलेशन स्टार्ट किया है ना। गुजरात में भी लैंग्वेजेस डिफरेंट है, सूरत की गुजराती अलग है, काठियावाड़ की गुजराती अलग है ना। बट वहां पे नहीं है फैसिलिटी, यूपी में इन्होंने स्टार्ट किया है। मैम आगे, ठीक है, फाइन। ठीक है, एक बस मैं लास्ट बता देता हूँ। ये मेजोराना वाला आप लोग रिसर्च करना, ये ओपेक में बता देता हूँ। ठीक है, मैम आ गए। तो ओपेक प्लस टाइम, फिर आप लोग का टाइम ज्यादा बचेगा नहीं। व्हाट इज ओपेक? ओपेक इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, कुछ कंट्रीज हैं जो पेट्रोलियम इंपोर्ट करते हैं, कुछ हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं जिनके पास है पेट्रोल। फाइन, तो जो गल्फ कंट्रीज हैं मोस्टली सारे ओपेक में है। इंडिया इज द कस्टमर ऑफ दोज कंट्रीज, इंडिया वहां से ऑयल इंपोर्ट करता है। क्लियर? तो ये जो ओपेक है, ये सब जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, ये लोग सभी साल में कुछ दिन बैठते हैं और वो लोग डिसाइड करते हैं कि हमें इस साल कितना प्रोडक्शन करना है। क्योंकि ये जो ऑयल है ये लिमिटेड क्वांटिटी में है। भले सऊदी अरेबिया के पास बहुत सारा ऑयल होगा, बट कब तक चलेगा? लिमिट तो होगी ना कुछ ना कुछ। सो दे वांट टू मेंटेन कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो इतना ज्यादा ना हो कि हम लोग जल्दी खाली कर दें हमारे ऑयल रिजर्व्स, फिर हमारे पास बाद में कुछ रहे ही नहीं। पानी तो पहले से ही नहीं है, ऑयल भी नहीं रहेगा तो फिर हम खरीदेंगे कैसे? बात समझ रहे हैं ना। तो सो दे दे मेंटेन दीज थिंग्स कि इतना प्रोडक्शन होगा, इतना प्राइस होगा, एंड दैट्स हाउ दे गवर्न द ऑयल प्राइसेस इन इंटरनेशनल मार्केट। तो ब्राजील के पास भी थोड़ा बहुत ऑयल है, तो ब्राजील हैज आल्सो ज्वाइंड दिस ओपेक। ठीक है, तो बाकी मैं आप लोग को ये पीपीटी शेयर कर दूंगा। मैम अभी आ रहे हैं, सो शी विल स्टार्ट विद वीए। ठीक है। इवनिंग इसको लगा दें। हाँ ये लगा दो। Unmuted, no? This is the classic format. Yes. I'm comfortable with that. Which sheet have you received for today? Tenses. Subject verb agreement was last time, no? Last some exercises were left. Oh. So I'll begin from there. But let me see. What sheet have you received? We haven't received any. The subject. Subject verb agreement. Okay. Subject verb agreement, we completed the warm-up exercise in class. And exercise 1, I think we've completed till 5 only. Hai na? Yes. We'll continue. Start with the complete exercise 1. There are 50 questions in total. So quickly complete it. I'm starting, I think 20 minutes should be enough. 15 to 20 minutes. Yes? Start. Complete exercise 1. Yes, those of you online, Pranav, Anvesha, Janvi, please complete exercise 1 of subject verb agreement. Last time I gave you the concept. Everyone has the material. Up. I'm carrying all the 3 books even now.
Start. 15 minutes. I've set a 15 minutes timer.
Okay, then don't talk. Hello. Yes, let's discuss the answers now. Okay, calling out. You have the answers at the back. Have you checked the answers? Quickly check your answers on your own. Want me to call them out? That will be faster. Yes? Okay. Exercise 1. Till number 5, I'm just repeating the answers in case someone has not marked them. 1 is B, 2 is A, 3 is A, 4 is C, 5 is A, 6 is B, B for Bombay, 7 is B, 8 is A, 9 is B, 10 is A, 11 is C, 12 is B Bombay, 13 is C, 12 Bombay, B, 13 C, 14 Bombay, B, 15 B, 16 A, 16 A, B, Bombay, 17 D, Delhi, 18 A, 19 C, 20 B, Bombay, 21 A,
22B, 23C, 24D for Delhi, 25B Bombay, 26C, 27A, 28B Bombay, 29C, 30B for Bombay, 31 and 32B Bombay, 33, 34D for Delhi, 35C, 36 and 37D for Delhi, 38A, 39 Bombay, 40C, 41 Bombay, 42A, 43, 44, 45, 46, all B for Bombay. 43B, 44B, 45B, and 46B again. Why are you erasing your original answers? Are you doing that? So the point is you need to keep a different sign for your marking answers and a different sign for the correct answers so that you know that the ticked ones are the correct answers, the circled ones are your answers. Because it is part of your job to analyze why did I circle that answer? Why did I choose the wrong answer? If you erase the wrong answer, then you've forgotten that you marked it incorrectly. Did you understand what I'm saying? Keep both the markings, right? So you should know why did I make that mistake. That's how you will learn that there you have a gap in the concept. 44 Bombay, 45 again Bombay, 46 B for Bombay, 47 A, 48 C, 49 and 50 B Bombay. Okay, doubts? Any numbers in between? Huh? 35, you want the explanation. Answers everyone has got till 50? Huh. 35 is a doubt. 4. I think 4 was discussed. You were absent on Friday. You know, you were absent. Okay. Tell me, read 4. What is the subject of the verb comes? What comes down? Whenever you have to find the subject, what will you do? You will ask the verb. Ask the verb, what comes down? What's your name? Garvit, what comes down? Compute prices. Prices is plural. So what will it be? Prices come down. Yes? It's no, so you will not change the noun. The verb is questionable over here. Prices is right because we are talking about plural computers. There can't be 2 mistakes. Will you change? Will you change? I'm going to buy a computer as the prices because you're talking about general prices, na? So prices mein to kuch galat nahi hai. It is prices come down. Come down is wrong. Yes. 35. A variety of pleasant items in the shop pleases everybody, na? A variety is singular. The subject is variety, not the pleasant items. A variety of pleasant items pleases everybody. Clear? Everyone? That's 35, huh? 37. Real estate prices in the business district of the city are expected to rise at 15% this year. Trade prices are expected to rise. What's the answer? What did you choose? What mistake did you find in C? So, number 1, this is subject-verb agreement, not prepositions. But of course, in the real exam, everything will be mixed up. Okay, having said that, why are you saying it will be up to? The usage is correct over here.
They are saying real estate prices are expected to rise at 15%. They're giving a specific figure. Whenever we give specific information, we use the preposition at. For example, I live at this address. You are expected to come at 7 p.m. Specific time, specific place, specific number. We use the preposition at. Okay, so nothing wrong in at. You had a doubt. You said some number you were saying. Yeah, so go ahead. Tell me which numbers. 28. Rivers have an intrinsic beauty of their own. 28. Which provides. Now see, what does which refer to? In the last class, I had done this. What does which refer to? What is your name? Quaish. What does which refer to? Rivers or beauty? Now figure out what the verb should be. If which refers to beauty, then it will be provide or provides. Which question? Okay. Countable. How can beauty be countable? Ah, I got your logic. Very interesting question. Even if I use an, it does not make beauty countable. I'm using an because of the adjective intrinsic, but that does not make beauty countable. Can I say 5 beauties? I have 5 beauties, you have 10 beauties. ऐसे तो नहीं बोल सकते हैं ना. तुम यही समझ लो, पीछे में s लगा लो, समझ में आ जाएगा. Does it take s or not? There is no plural form. It's not possible to count beauty because it is an abstract noun. Next. Yes, Neve. Thank you. Unmute yourself. Ask the question quickly. Which one? I can't hear you. Repeat. Yes, Neve, which number? 31st. 31st. Yes. Okay. 2 great men whose birth centenary have been celebrated this year have expressed strong views against capitalism. Won't it be whose birth centenaries? Because it is 2 great men whose birth centenary. 31. What is the answer? 31B. Bolo, what is your doubt? It should be birth 2 great men whose birth centenaries have been. Plural of centenary? What is it? 100 years. CENT stands for 100. Century. Cents. That is 100. So 2 great men whose birth centenaries. Because centenaries of 2 men. Neve, am I clear? Neve, did you Yes, understand? Okay. Ma'am, would you please repeat it one more time? What? Would you please repeat it one more time? Birth centenaries is the correction. I'm writing it down. Can you see in the B section of the sentence, they've written only centenary. It will become centenaries, plural. Because there are 2 people, na? 2 people, so this will be plural. Am I clear? Yes, Neve? ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yeah. Any other doubts? Online students? Tell me. Okay. 6. So, neither of the students, whenever you use neither as a subject, the verb will be singular. Either, neither, these are all singular. Is responsible. Next, 11th. The banks may have followed an aggressive monetary tightening policy, but it does not match with banks. Banks is plural, it is singular. है ना? But their stated aim of curbing inflation has not been achieved. Has not been achieved.
because the aim is singular. So actually there are two mistakes over here. The banks may have followed an aggressive monetary tightening policy, but their stated aim of curbing inflation has not been achieved. There are actually two mistakes over here, B and C. What is the answer? C. But there are two mistakes. Make that correction. It should be there. Because banks is stated as its, whereas it is banks. Hai na? Their stated aim. Because it refers to banks. The report is candid in admitting that the investment by the government in health and family planning investment is singular, has been eroded considerably. What did you say before this? This one, na? 11. 11, there is a mistake. Yes. Industry experts point out. This is easy. Industry experts. So it will be point. Singular verb ends in S, plural verb does not end in S. Industry experts, plural, therefore points will change to point. Clear? Doubts? 24. It depends on how. It depends. It is singular, depends S. Yes? Singular verb ends in S. You have to remember that. Three of you at the back. You have no doubts? Or you're solving them among yourselves? No doubts. Okay, don't talk. Bolo. 14. 43. Many a student. Yes, please write a note next to this. Many a is a singular expression. Many a. Always to be treated as singular. Many and a when taken together. Not just many. 43. Many a is a singular expression. So accordingly, the verb will be singular. Yes. 27. Does she learn from her mistakes? She is singular. So why will the verb not end in S? She does learn from her mistakes. Does she learn from her mistakes? Okay. 18. What does? Many a is equivalent to each or every. Like every or each are always singular. Many a is always singular. You're taking things one at a time. Many a student is absent today. Okay. 18. He who does not. Who refers to he. Therefore, he who is singular. Therefore, singular verb does. He who does not learn from his mistake. Okay. 22, 45. And then yours. The supervisor noticed that one of the employees was. One is connected to was. 22 ho gaya, 45. Yes, singular. One is singular. Was. Daily prayer and meditation is the key to a happy, peaceful and happy life. You're thinking, is it one idea? You will know if it is one idea. These are common expressions like beauty and brains, bread and butter. You can write few. Beauty and brains, bread and butter. These are common expressions. You know they are taken as one idea. Pen and paper. Hai na? Pen and paper is needed to take the test. Taken as one. So you will know when it is one. Daily prayer and meditation is not a known phrase. It is plural. Therefore, are key. The captain along with his colleagues, what is the primary subject? Tirth. Yes, 48. Oh, I'm sorry, I read 49 ना? कोई बात नहीं, 49 डिस्कस करके फिर करती हूँ. 44 I did ना? No, करती हूँ. 49 तीर्थ मुझे बताओ आंसर क्या है? करेक्शन क्या होगा? हाँ? करेक्शन बताओ.
C तो है नहीं. 49 is not C. 49. Everyone look at 49. This is an important question. But why? What is the correction? Teerth, tell me. Hmm? Why? So what is the primary subject? What is the primary subject? Teerth. Captain. Therefore, it is singular. And if I change along with to and, then is the sentence correct the way it is? Yes. Everyone remembers that concept I taught on Friday? Correct. So please mark this up. This has to be learned. 48, someone asked. To be effective. Whose doubt was this? To be effective is one idea. Okay. To be effective, it is very important for employees to know how various departments in an organization function. So write down over there what functions, and now look for the subject, because there are many subjects in the sentence. So if you ask what function, then you get to know what is the subject of the word functions. Departments. Departments plural, therefore function. So you have to work it backwards. 49. हाँ, वो कुछ भी हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि along with does not make the subject plural. The subject remains the first subject, captain. Colleague हो, colleagues हो, कोई मतलब ही नहीं है. Can you explain the 48 one again? The department. Just write down what functions over there and find the subject of the verb functions. The departments function. Therefore, it won't be S, it will be function. Clear? Yes. 44. Do you know that it was I who has done this piece of beautiful work? You know, it was I. ही होगा, as ही होगा. No. She's asking a question now. Do you know? Meaning, is it in your current knowledge? Do you know it was I who has done this piece of you? It should be has only. The answer is B. Let me. It was B, na, the answer. So the implication is it should change to have. But I don't agree. I think it is has only. Why me? I is the subject, I is the doer. Why will it change? I is not singular. That is the confusion. Okay, hold on. In subject verb agreement, one note you should write. You and I are naughty children. They don't follow the rules. You know? They are treated as plural, even if they are singular. I is singular, but I have done my work. You have done your work, even if you is singular. So you and I, you are unwell. Are, plural. But here, the subject is not strictly I. The subject is who. Therefore, has should be the answer. In my opinion, the answer should be has. So let me check 44 and get back. Reported, direct. The speaker is speaking. Do you know that it was I who has done this piece of beautiful work? This is direct. है ना? Yes. Were comes in place of was when it is a hypothetical situation. I wish I were the captain of the Indian cricket team. I can never be. It's an imaginary situation. This is a question, not a hypothetical situation. Yes. Yes, Neev. You have many helpers here. Unmute. Ask. Yes, ma'am. Ma'am, I'm having doubt in 35th. 36? 35th. 36. No, ma'am, 35th. 35th. Okay. Yeah. A variety. Variety is the subject. So variety is singular.
So singular verb is pleases. Understood? What pleases? Write down next to 35 what pleases. You get the answer variety. Yes. Therefore, But I was variety. considering pleasant items as a subject. Yeah. Okay. Chalo. Let me start with tenses. I'll take the other doubts later. Yes. And you also had a doubt, na? Solved. 38 and आपका कौन सा? मैं फिर से बाद में समझाऊंगी. 38 I'm doing right now, and then I'll start with tenses. Most birds sing. Most birds is plural, na? What's your name? Kavya. Can you see most birds is plural? So if it is plural, what will it be? Sing. Understood? Ho gaya? Now look at the board. Take out your exercise book. I'm going to go super fast, so don't talk. You can look at the tenses notes that you have a little later. But first look at this particular online students also pay attention to this timeline. You can copy this in your notebooks. Okay, I'll be building upon this. And this is very useful even for reported speech. Because in reported speech also we will be referring to the same graphical depiction. Okay. Now consider this is the present time. Right? This goes towards future and this is towards past. Now recent past is present perfect. Whatever happens recently is used as present perfect. It's not past because it's not that far back. And it's not present either because it has already happened. For example, at 8:35, you can tell your driver or your parents, whoever you want to get picked up. You'll say the class, my English class has got over. Has. Or if it's plural, we'll use have. I have completed my class. You can come and pick me up. Now, we don't use has, have that often. There's one reason for that. We're Indians and we don't have a perfect tense equivalent in Hindi or in any of our languages, Gujarati, Marwadi, any of them. There are 3 tenses, hai na? Bhoot, Bhavishya, Vartaman. But this is a very English concept, this perfect, which makes time more exact, more accurate. So understanding the tense becomes important because then you know exactly what time frame are you referring to. If you use has or have, I know you're referring to something that has happened very recently. I have lost my purse, which means I still haven't found it. Will you help me find it? That is the implication. I have polished my shoes. That means you don't need to clean them again. They're shining. Right? So what are the clue words? How do you understand that this action took place in the recent past? How do you understand that it took place in the recent past? So you look at the clue words. If you see these words recently, already, just now being used, then you know that these are recent actions, right? And if you also notice, there are 2 kinds of scenarios for present perfect. One is recent past. The second case is when you're talking about an action that starts in the past and continues till the present. Starts in the past and continues till the present, which means it's something like this. Okay? I'm not saying it's still continuing. I'm just saying it continues till the present. If it's still continuing, then it becomes another tense. We'll get into that later. But it continues till the present. Then also we use present perfect tense. The action starts in the past and continues till the present. She has lived in Surat for 20 years. That means from the past till the present, 20 years have been completed. Again, clue words for and since. What is the distinction between the use of for and since? For refers to a duration, a period of time. Yes? And since refers to a point, a certain point of time. I have been teaching since 4 o'clock. But if I change this, I want to use for, I'll say I have been teaching for 5 hours, 4 hours, whatever.
because now I'm talking about the duration. Don't interchange them. They are not interchangeable. That's a very common mistake. Okay. And you will use present perfect for both because from the past till the present. This is present perfect. And this is an exam favorite. Perfect tense is an exam favorite. Simple present tense, I think all of you, most of you are from CBSE. So you will know about this rule. I brush my teeth implies every day. And regular actions, I play basketball regularly. Universal truth, sun rises in the east. ये तो बचपन से सीख रहे हो. All this is simple present tense. But this is unusual. This is obviously future tense. The bus will leave in some time, but it is the immediate future. Therefore, we can use leaves. In form, it sounds as if it is simple present tense, but actually it's referring to a future tense event, which is about to happen, right? It's going to happen. So in place of leaves, you can also use going to, which is also correct. It doesn't, the classification doesn't matter. When you are looking for mistakes in the sentence, that's when it matters. What is the usage, right? This is an official timetable, right? If there's an official timetable and it's going to happen in the future, we can use simple present tense. Reopens. December is a long way off, but you can use reopens. Why? Because it is an official timetable. Okay, now let's look at your notes. Tenses notes, open. Everyone's received the sheet. See the table on top. Yes? There are three kinds of tenses, but they're subdivided into continuous, perfect, perfect continuous. Now, quickly, yes, I want you to read present simple tense, habitual action, habit, custom, practice, repeated action, permanent activity, general truth, right? Scientific phenomena also you can add to this list. Photo to this list. Simple present tense over here, you can just add to the description. Scientific phenomena, photosynthesis. Obviously, you will use simple present tense because it is always made in a certain way. So simple present tense will be used. These ideas are expressed by adverbs of frequency. Don't get into technicality. All they are saying is there are clue words. Seldom, always, rarely, frequently. These words indicate that there is a regularity in these actions. Whenever the action is regular, we know we have to use simple present tense. Make sense? Okay. The old lady goes for a walk in the morning. If I say the old lady is going for a walk in the morning, suppose I'm going to change the sentence. I'll say, usually the old lady is going for a walk in the morning. So you know is going is wrong. It should be goes, right? Parul usually is believing everybody. These are common mistakes. Huh? Is believing. People keep writing like this. That's wrong. Historical present. Now Netaji enters and addresses the Indian soldiers. This you will know whether it is right or wrong by the context. In the sentence, there will be clues that will tell you what tense is to be followed. Whether it is supposed to be past tense because it is a historical event, or whether it's supposed to be present tense. By looking at the sentence, you'll know. And this is the one I explained, future arrangements. Prime Minister arrives from New York tomorrow. He leaves his job next week. This is that one. Unusual usage. Okay? Now, continuous tense has been explained. For continuous tense, I just want you to write one thing. Use continuous tense for incomplete actions. And when I say continuous tense, I'm covering all past, present, future. Continuous tense is to be used for
Just write this down. Big capital letters so you never forget. Incomplete actions. Whenever you use continuous tense, even in your spoken English, ask yourself, is the action incomplete? Why am I using ing? Do you know Indians abroad are often made fun of for using ing too frequently? It's a fact. Because we really like ing a lot. We keep adding ing to everything. But actually, it's not required. For example, I write down this sentence. I was studying yesterday, full stop. Is it correct or incorrect? I was studying yesterday, full stop. Okay, so who said you think it's correct? Is it incomplete? Are you still studying? No. And was your action interrupted in the past? No. You completed whatever you set out to do. So why will you use ing? I studied. Past tense. I studied yesterday. At that point of time, whatever I had intended to do, I did it. So I studied yesterday is correct. No need to write I was studying yesterday. And we all speak this kind of English. Write down. Now write down the sentence. I was studying yesterday when the lights went out. My action got interrupted. My action remained incomplete. I wanted to study more. I could not. I was studying yesterday when the lights went out. Okay. Now the problem is, since this is a very common problem in India, you might find a question in which the continuous tense is also used, but in some other part of the sentence, there's a bigger mistake. Then what will you do? Bigger mistake. Then you will choose the bigger mistake. Everyone follows what I'm saying? This is a smaller mistake. If you find a bigger mistake in the sentence, go for the bigger mistake. But if there is no mistake in the sentence, because increasingly language is getting better, even in India. So the expectations are more from you. So if you find no other mistake and you can see this one, then go for it. Everyone follows what I'm saying? Yeah. So present perfect continuous. If I just continue this action, so I'll have to change this. She has lived. What will it become? Has been living. I'll just add ing to this. She has been living in Surat for 20 years if I want to imply that the action is continuing. This is present perfect continuous. Yes? Everyone clear? You can read that note. Who can read it? Yes. It is used for actions. Aloud, please. Why is it taking? You're not in the correct page. Can you read? Yes, present perfect continuous. That means he's still walking the dog. He started 40 minutes ago. He's still doing it now. Present perfect continuous. Simple. Also used for action after receiving. I have been doing yoga nowadays. Why is this in continuous? Because I'm still doing. That action is continuing. I started in the past and I'm continuing it now. Recently I started and now it is continuing. Right? Used for action past and stopped recently. Example, it has been raining. It has been raining. What does it imply? If I say it is raining, it is still raining. But if I say it has been raining, that means it has been raining for a while. Now it is not. Got it? The for a while part is implied. That recently it has been raining. Now, if it had been raining now, I would say it is raining. It is still raining. Or I will say it has been raining since morning.
then it means अभी तक बारिश हो ही रही है. But it has been raining full stop means अब बारिश बंद हो गई है. Near the present, just near past and a little bit more. Is present perfect. Correct. Okay. He is living in Surat for the past 20 years. Yes. What's your question? No, it's not. You should use he has been living in Surat for the past 20 years. This is correct. Okay. For 3 days. For 3 days. The moment you see for, you know you have to use present perfect tense. That's a clue. Okay. Now, no, I will do past perfect tense in the next class. Let me specify the homework. You will get the message. The first homework is this one, subject verb agreement 51 to 80. Exercise 1. I've completed till 50 in class. Next homework is tenses. Can you quickly do the warm-up exercise? Or you're in a mood to leave? Okay, bye. Bye. Chalo. Online, quiet. Online, what are your doubts? Neev, Pranav and Anvesha, Janvi, unmute. What are your doubts? No, ma'am, no doubts. No doubts? Were you No. able to follow the tenses notes? What, ma'am? Tenses, the tenses explanation. Were you able to understand? Yeah, ma'am, yeah. One. And then ask the doubts and take. No problem. Anvesha, you unmuted. I think you have a question. Ma'am, can I get the PDF for the tenses notes? I'm sorry, what is your question? Can I get the PDF for the tenses? I don't have the PDF. Yes. I'll ensure you get it. I'll ensure you get it. Okay. I'll Yes. just ask the office people to send it to you. Anything else? Any doubts from subject verb agreement? Anvesha? No, ma'am. All right. All right. You can leave. Bye-bye. Bye. Ma'am, Yes, Neev. ma'am, I was having this doubt that yesterday when I was asking about how many, if we use how many in a sentence, then Neev, 1 minute. There's something wrong with your mic, I think, because your voice is not clear. Anvesha spoke just now. She was very clear. Why isn't your mic clear? I don't know, ma'am. Am I audible now? Yeah, you're audible, but your voice is blurred. It's not clear. Very Actually, hard. ma'am, I'm not using any Bluetooth, devices. That's why I think that's a problem. You're not using what? Bluetooth device, and I'm just using the laptop's audio. Can you fix the problem? It's very hard Yeah, to ma'am, for sure. In the next class, I will definitely do it. Yeah, Yeah, do ma'am, that, sure. please, because I can't understand what you're saying. Okay, Okay. sure, ma'am, What sure. are you Yes, saying yes, yes. just now? Tell me. What No, were no, you I was asking that yesterday in the last class when I was asking you about how many usage in the sentences, then you told me about that Yes. how Yes. many just refers plural, in the sentence. Yes. So, So, many is plural, mhm. but many is singular. Okay, okay, Many is plural, but many is singular. ये बात है. okay. I was just Write it down. When yes, it is ma'am, sure. many, then it is plural, but many is singular. Got it? Okay, ma'am. Yes, This ma'am. is the thing. Thank you, Okay. ma'am. Yeah. All right. Okay. Bye. Bye, ma'am. Bye, ma'am.